June 2013. Kedar Valley had just woken up in May. The Char Dham Yatra had started after 6 months of snow-covered hibernation. Vedic chants and ding-dong of bells making a strange coexistence in the moist green mountains. Devotees had started pouring in, and the locals were looking forward to another great year. 70% of population of Rudraprayag district is associated with religious tourism, most important of which is the Kedarnath Yatra. On a good day in the peak season, 12 to 15,000 devotees pray at the Kedar temple. On 16th and 17th June 2013, the areas upstream of Kedarnath experienced unprecedented rainfall, which caused flash floods. Rivers were already overflowing when the Chaurabadi Glacier Lake burst. This resulted in a massive wall of water and debris, hurtling through River Mandakini and sweeping everything that came in its way. सूचना जैसे हमारे कंट्रोल रूम को मिली उसके तत्काल बाद हमने जो है संबंधित अधिकारियों को इन्फॉर्म किया और शासन स्तर पे जिला स्तर पे ये निर्णय लिया गया कि तत्काल जो है यात्रा को रोक दिया जाए क्योंकि बहुत भारी वर्षा हो रही थी और जगह जगह पे जो है रोड ब्लॉक होने की और लोगों के फंसे होने की सूचना हमें लगातार प्राप्त हो रही थी। पुलिस, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ को भी सूचित और शासन को भी तत्काल सूचित किया गया। रात को पानी बढ़ना धीरे धीरे स्लोली ऊपर बढ़ता गया। 16 तारीख को उधर से मेरे ख्याल से मकाने को लेकर आ धीरे धीरे लेते रहा 17 तारीख लगभग 11 बजे तक यहाँ तक पहुँच गया था। बाकी इधर जो कमरे थे सब है, इसके ऊपर डबल स्टोरी थी वो भी गया। पानी की साउंड इतना तेज था कि पूरे गांव तक मकाने हिल रही थी, जैसे भूकंप के झटके आ रहे हैं वैसे लग रहे थे। मतलब मकान पत्थर थे इतने बड़े बड़े, आज जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं बड़े ये पत्थर तो बह के आ रखे हैं, तो पानी में इतना प्रेशर ही रहा होगा जो इतना बड़ा पत्थर बह के आया। 34 फैमिली लोगों की मकान इधर सब तहस नहस हो गई। यहाँ से आगे वहाँ पर नजर नहीं पड़ती थी, आज यहाँ से वहाँ साफ दिखाई दे रहा है। With 79 roads blocked or washed away and 29 bridges damaged, an emergency situation existed in the district, particularly in the Kedarnath Valley, where 22,000 pilgrims and 25,000 residents were totally cut off. It was a very Herculean task to rescue and evacuate the pilgrims who were caught at various places, and then providing civil supplies, food, water, clothing, blankets to these people. It was all done through the help of administration, Indian Air Force, Indian Army, police, ITBP. The rescue operations matched a war-like situation. Almost 22,000 pilgrims were evacuated from the region within 6 days. Food, water, clothes, blankets, and medicines were heli-dropped or distributed through relief camps. Many NGOs also dropped in. They also went through the mountainous routes, through the trolleys, taking ration and fuel and food for these cut-off villagers and helped the administration side by side. जैसे ही यहाँ डिजास्टर की इन्फॉर्मेशन उनको मिली, केयर ने हमको संपर्क किया, हमने केयर को संपर्क किया। वो लोग यहाँ आए और उन्होंने बोल दिया कि यू जस्ट गो अहेड। यहाँ से चंद्रापुरी 7 किलोमीटर है, लेकिन उस वक्त हमें 7 किलोमीटर से नहीं, हम 102 किलोमीटर घूम करके चंद्रापुरी पहुँचे हैं। तो वहाँ पे हमने चंद्रापुरी, गबनी गाँव, उसके बाद भटवाड़ी सुनार और उससे नीचे ये 4 गाँव हमने वहाँ पे प्राइमरी रिलीफ दिया है, इमरजेंसी रिलीफ हमने वहाँ पे दिया। 15-16 जून को कि हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने जो है यहाँ पे आकर के राहत का, राशन का जो था पहले और मेडिकल कैंप वगैरह भी किए थे लोगों ने। तुरी नारायण से लेकर के और ये पूर्की तक प्रत्येक गांव में हम टच करेंगे। तो किट में हम कम्बल का इस्तेमाल करते हैं, 4 कम्बल रहते हैं उसमें, फुल किट के लिए, और 4 पैंट रहती है उसमें, 4 शर्ट रहती है उसमें,
3 सूट पड़े रहते हैं, लेडीज सूट, और उसमें बच्चों के कपड़े 8 रहते हैं, जरूरत के अनुसार डालते रहते हैं, जैसे ऑनलाइन में नीचे से कपड़ा वुलन वगैरह रहता है उसमें। पूरी एक फैमिली के लिए जो ज़रूरतमंद जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरा एक पैकेज बना के उसको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। There was a spontaneous outburst of humanitarian support from across the country. After relief distribution, these agencies have been focusing across sectors like shelters, infrastructure, livelihood, childcare, education, and healthcare. हेल्पेज का एरिया बेसिकली ब्यूम गार्ड से लेके तोशी गौरीकुंड तक है, और यहाँ पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर और एमएमयू है। एमएमयू इस बेस सेंटर से वो गांव-गांव विजिट करती है। फिजियोथेरेपी में हमारे यहाँ पर डे कम से कम 40 से 50 पेशेंट्स का फुटफॉल है। एमएमयू में 40 to 45 पेशेंट पर डे। 7 जुलाई से लेके कोटमा में और मेडिकल सेंटर ये चला रहे, और गुप्तकाशी में, ये 2 जगह, और बाकी जो इस क्षेत्र की जो और जगह है, त्रिजुगी नारायण हो, फटा हो, उधर मेखंडा, नागजगाई, उधर हम मेडिकल कैंप बीच बीच में करते रहते, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम करते। With Himalayan winters fast approaching and nearly 2,000 houses damaged, many agencies focused on providing shelters. बेसिकली चाका में 8 शेल्टर बनाए हैं। फलाटी में हम 41 कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, जबकि बुडोली में हमारे पास 16 कंस्ट्रक्शन हुए हैं। चंद्रापुरी में 18 कंस्ट्रक्शन हुए हैं। और सबसे बड़ा टिपिकल पार्ट इस पूरे प्रोग्राम का ये है कि चारों के चारों जो गांव हैं वो अक्रॉस द रिवर हैं, और यहाँ से वहाँ की कनेक्टिविटी सारी खत्म। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बहुत बड़ा चैलेंज था हम सबके लिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो ये पुली लगाई गई, उसके बाद से थोड़ा सा हमें रिलैक्स ये मिला कि हम अक्रॉस द रिवर पुली के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करने में थोड़ा सफल हुए। शेल्टर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने उसको लाइवलीहुड ऑप्शन से भी जोड़ करके देखा है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और लेबर चार्जेस है, 1 रुपया भी उस गांव या पेरिफेरी के गांव के अलावा बाहर नहीं गया है। उससे बड़ी मज़ेदार बात ये रही है कि 97 डेज में हम 83 शेल्टर कंप्लीट करने में कामयाब हुए। ये जैली गांव है और अमर फाउंडेशन के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले साल भी और इस साल भी काफ़ी घर टूट गए थे बरसात के टाइम पे। तो ग्राम पंचायत ने एक हमको लिस्ट दी थी, जो प्रधान थे और गांव के पंच होते हैं, उन्होंने 20 लोगों के यहाँ पे हमें दिया था, इनके घर नहीं, रहने के लिए नहीं है। तो अमर उजाला फाउंडेशन से भी यहाँ पे लोग आए थे और हम लोगों ने भी उनका सर्वे किया, तो देखा कि इनके पास घर नहीं है और दूसरों के घरों पर रह रहे हैं, इनके लिए क्यों ना एक घर तैयार कर दिया जाए। तो ये डिज़ाइन जो आया है घर का बहुत ही बढ़िया है। 16 बाई का एक रूम है, इसी के अंदर एक किचन है और टॉयलेट बाथरूम है। तो लगभग पूरे घर पे जितना खर्चा आ रहा है, 50% गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है इसमें, और उनको रहने के लिए घर भी मिल रहा है। जिसे थुमी कहते हैं, मीन्स द सेंट्रल पिलर ऑफ द हाउस, और उसके अक्रॉस ऐसे ही होता था। अगर पहाड़ के पुराने घर देखोगे जो लकड़ी के स्लैब होते थे, ऐसे डले होते थे, ये भूकंप के समय क्या होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इसमें मैक्सिमम भूकंप भी आ जाए 8 रिक्टर स्केल का, तो मेरे को लगता नहीं इसमें मरेगा कोई। इनका सपोर्ट है, इन्होंने बना दी। ऐसे मकान बनाएंगे, रहेंगे। ऐसी हैसियत नहीं आ रही थी जब हमारा घर बह गया, तो इन लोगों ने सारा दिया, सरकार ने थोड़े मदद की। Along with reconstructing shelters, rebuilding infrastructure is another major construction activity going on. While most utilities were repaired on an interim basis within a month of the disaster, government departments are now working on permanent restoration of roads, electricity, water supply, etc. Roads and bridges, of course, are especially of critical importance.
Multiple support agencies are working on rebuilding primary and secondary schools, Anganwadi centers and community centers. Focusing on comprehensive needs of disaster-affected families, particularly children. Many agencies are working on providing child-friendly spaces, hostels for orphans, and improving education delivery mechanisms. As most of the inhabitants of the district were dependent on the Kedar Yatra for their livelihood, alternative livelihood options are needed. Almost 1 million man-days of employment has been generated through Manrega. Many agencies are now focusing on the livelihood sector in a coordinated manner. मंदाकिनी समिति जो हम लोगों की बनी है, ये आपदा के बाद यहाँ पे जब स्थानीय समुदाय की जो ज़रूरतें निकल करके आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया है कि कैसे हम स्थानीय लोगों को एक रोज़गार दे सकें, एक सस्टेनेबल रोज़गार दे सकें, जिसमें हम लोगों का टेक्सटाइल पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 300 वुमेन्स जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, यान प्रोडक्शन में है, कुछ लोग नीटिंग में हैं, कुछ डिजाइन में है। मंदाकिनी का जो मेंबर है, सोसाइटी मेंबर है, इसका पूरा जो बोर्ड है वो इसी में से लोग हैं। पंचायत के साथ में जो आपस में कोलैबोरेशन है वो ये है। तो बेसिकली जो मेन 2 चीज़ों के लिए उनके साथ में टाई अप हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपको एक तो हमको मार्केट देना है, फॉरवर्ड लिंकेज, एंड दूसरा जो टेक्निकल नो वो बताने। नेक्स्ट 6 मंथ में वो अपने घर ले जाएंगे, ताकि वो अपने घर की एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम लोग उनको ऊन देंगे। ये ट्रेनिंग सेंटर चलते रहेंगे। This is a very ecologically sensitive area, not only in terms of the entire state but also for the entire country. The foundation is looking a holistic approach in a watershed level. This watershed that we are working, a major tributary to Lastargad, known as Hilongard watershed. So we will be working around the agriculture, animal husbandry and horticulture of these villages. We assume that if water as a resource in a watershed can be preserved, can be conserved in a proper way, I think the prosperity of a watershed as a unit can be increased. We feel that over a period of 2-3 years also have a holistic understanding of what actually needs to be put forward in terms of policies. In whole of this response from the administration side and parallelly from the side of the NGOs, the one nodal factor, the one coordinating factor was the role of United Nations Disaster Management Team. UNDMT deputed 2 experts, Mr. Praveen and Mr. Rishi. They have been very, very helpful in providing us the expertise, because many areas and forums, given the extent of the disaster, were new to us, and they really helped the administration in developing the procedures, especially in management of NGOs, corporates and CSR activities. Now I feel that there is a proper edifice available in the district for management and coordination of NGO and corporate activities, in which we are constantly monitoring the efforts and these activities done by the NGOs. Immediately after the disaster, government invited UN to carry out an assessment, needs assessment. UN was then asked to do the social sector plan, which is a window of all the sectors like health, child interventions, education, and shelters would be done in a single window system. By the end of July, and
the early August, the district was ready with their social sector plan. The early month of September, UN was invited to do the coordination of rehabilitation and recovery programs of various districts. One of the important things that we have been working on is ensuring that the right set of paperwork is done and the needed approvals and authorizations are set in place before the organizations start their work. As part of the process, what we have evolved is at the beginning of a process, any agency that wants to work in the district gives an expression of interest, on the basis of which ensuring there's no duplication, ensuring the right areas are covered. On those considerations, the district administration gives an agreement which is an in-principle approval. The agency does detailed field work and submits a detailed project plan to the district administration. Members of Red R India, a humanitarian non-profit organization that provides training, recruitment and advisory services for emergencies, have been deployed as UNDMT coordinators. तो UNDMT की टीम ने काफ़ी कॉपरेट किया हमारे पास, especially Praveen and Rishi. It has been very helpful to have UNDMT here. It was sort of a definite place in a district where we can go and sort of let them know what we are doing and what are the needs in the area. And they have been effective in bringing government and civil society organizations together. The district level authorizations, which have helped the support agencies in executing their work within and outside the district, are provided within days, sometimes even within hours. I think we can say with satisfaction that there has been minimal duplication of work between various agencies. I also think we have been able to ensure that a lot of paperwork has been done effectively in time, and therefore ensuring that the agencies are able to start their work as soon as possible. Regarding the priority areas, we have some 844 beneficiaries under the housing scheme that they are able to rebuild their houses before the onset of the next monsoons. And then to restore the livelihood is again a priority areas. Thirdly, there has been a loss of human life also. Their dependents and the widows, they have to be constantly monitored, and the constant organization of mental health camps seems to be a priority in the ensuing years. We have to monitor these infrastructure projects which would be coming up in the coming years. This also would be a full-time priority of the government. And then the priority vis-a-vis the NGO sector is that to constantly coordinate with them, monitor their activities and help them in their activities is again a priority areas. With nearly all the government departments and over 60 civil society organizations focusing on recovery, the district is throbbing with activity. Yet, while we have traveled a lot on the path to recovery, we still have miles to go, and miles to go before we sleep.